हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोलर्स। एंड अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट चाहिए तो जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर और द कंपनसेटर। बेसिकली क्या है कि जो कंट्रोलर है और कंपनसेटर, उन दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, बट ये दोनों फिजिकली डिफरेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे इसलिए मैंने कंपनसेटर जो वर्ड है वो मैंने मेंशन किया है, बट ये टॉपिक हम यूनिट 5 में कवर करेंगे। कंट्रोलर और द कंपनसेटर, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ टू ड्राइव द प्लांट टुवर्ड द डिजायर्ड आउटपुट। ओके, ये जो कंट्रोलर है या जो कंपनसेटर है वो क्या है, हमें हेल्प करता है कि डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करने में। इट मीन्स वी कैन से दैट कंट्रोलर, दे आर द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड पाथ ऑफ अ प्लांट मोस्टली। मोस्टली क्या है कि जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स वी हैव, लाइक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, we have derivative controller, integral controller, and then we have the combination of these controllers which is PD controller, PI controller and PID controllers. इनमें से क्या है कि जो मोस्टली जो कंट्रोलर्स हैं वो क्या है, फॉरवर्ड पाथ में लगते हैं, एंड समटाइम्स इन द फीडबैक, and these controllers, they are used to control the time response parameter. ओके, जो कंट्रोलर्स हैं वो टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर कहते हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन द टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर वी हैव सीन द स्टडी स्टेट एरर, राइज टाइम, स्टेबिलिटी, परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम। इन सारे पैरामीटर्स को ये जो कंट्रोलर है वो इम्प्रूव करते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपनसेटर, कंपनसेटर इज़ यूज टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पैरामीटर। इट मीन्स ये जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पैरामीटर्स है, वी विल डिस्कस these parameters later on, but you can note down that the parameters are the resonance frequency, resonance peak, we have gain margin, phase margin and bandwidth। अगर frequency response parameters को improve करना है then we have to use compensator, and अगर time response parameters को improve करना है then we have to use controllers। okay, next point is controller and compensator are functionally similar but they are physically different। Now let us draw the block diagram of a closed loop control system which is having the controller। ओके, सबसे पहले क्या है कि हम इनपुट अप्लाई करते हैं सिस्टम में, दैट इज़ आर ऑफ एस। देन वी हैव अ एरर डिटेक्टर, ओके, एंड इट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट विच वी हैव ऑब्टेन। ओके, देन वी हैव कंट्रोलर। ओके, जो कंट्रोलर का जो इनपुट है वो क्या है, एरर सिग्नल होगा। नाउ दिस इज कंट्रोलर। okay, generally controller, it is connected in the forward path, okay, and then we have a plant। okay, plant का जो transfer function है that is g of s, and then we take the output, and from here we have a feedback network। this is feedback, and feedback path gain or the transfer function is h of s, okay, and this is connected with this error detector। okay, this is c of s, and this is error signal which is input for this controller। okay, and this generally we consider the negative feedback। okay, ये जो controller है ये different types के हो सकते हैं, like it is p controller, okay, then we have derivative controller, integral controller, okay, and then we have the combination that is PI controller, PD controller and PID controller। ये सारे controllers जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द P controller, बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ टाइम डोमेन पैरामीटर्स। in order to discuss time domain parameter, let us consider a second order transfer function। okay, standard second order transfer function is given by omega n square by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square। this is plus omega n square। okay, now
we will take some parameters. Okay, now यहाँ पे क्या है कि हम डैम्पिंग रेशियो को इंक्रीज करेंगे. डैम्पिंग रेशियो दैट इज वी आर increasing the value of zeta. So damping ratio increases, and then in one column we will keep zeta into omega n product as constant. Okay, then we will observe what is the effect of increasing the zeta value on the various parameter. Okay, so first we will discuss for rise time. Okay, so जो rise time का जो formula था that is pi minus theta divided by omega d. Okay, so this theta it is in radians, so this theta can be written as pi minus, we know that zeta is equal to cos theta. ओके, सो वी कैन यूज़ दिस रिलेशन. सो यहाँ से जो थीटा हमें मिल रहा है वो कितना है, कॉस इनवर्स ऑफ जीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी. सो ओमेगा डी इज डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द राइज टाइम. सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं बाय कीपिंग ओमेगा एन कॉन्स्टेंट. ओके, so omega n is constant and we are increasing the value of zeta, that is damping ratio is increasing. So now let us see what is the effect on the rise time. So अगर हम zeta increase करें, so this zeta can be considered as a equivalent of friction. Okay, so अगर हम zeta increase करें, it means we can say that we are increasing the friction in the system. Okay, so अगर हम friction increase कर रहे हैं, it means, so if we are increasing the friction it means we are increasing the opposition. So it means अगर हम zeta की वैल्यू को increase करेंगे तो जो step response है उसे final value तक पहुंचने में time लगेगा. It means the rise time will increase. Okay, सो इस रिलेशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम जीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो स्टेप रिस्पॉन्स है उसे 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू को पहुंचने में टाइम लगेगा. इट मीन्स राइज टाइम विल इंक्रीज. ओके, एंड नेक्स्ट पैरामीटर लेट अस डिस्कस. सो यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर हम जीटा को इंक्रीज करते हैं इट मीन्स ओमेगा एन विल डिक्रीज. ओके, सो इफ़ वी इंक्रीज जीटा इट मीन्स ओमेगा एन विल डिक्रीज बिकॉज इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट शुड बी कॉन्स्टेंट. So zeta is increasing and in the denominator we have omega d which is omega n square root of 1 minus zeta square. तो यहाँ पे zeta increase हो रहा है, omega n decrease हो रहा है, then we can't say about the rise time. Okay, so we can't say anything if zeta is increasing and omega n is decreasing. Next parameter let us discuss पीक ओवरशूट दैट इज़ एम पी. सो जो एम पी का जो रिलेशन है दैट इज़ गिवन बाय ई टू द पावर माइनस ऑफ एन पाई जीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ओके, सो वी नो दैट एम पी दैट इज़ पीक ओवरशूट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग रेशियो जीटा. तो अगर हम जीटा को इंक्रीज करेंगे इट मीन्स द पीक ओवरशूट इन द सिस्टम विल डिक्रीज. ओके, एंड हेयर if we are increasing zeta then omega n will decrease, बट जो mp है वो omega n पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा. सो यहाँ पे अगर हम zeta बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी क्या है, सो इफ़ वी इंक्रीज zeta दिस implies that mp will decrease here. ओके, सो यहाँ पे this is the second parameter. Now let us discuss next parameter which is omega d. Okay, omega d is damped frequency of oscillation which is given by omega n into square root of 1 minus zeta square. So if we are increasing the value of zeta then this omega d it will decrease. Okay, so omega d will decrease and here if we are increasing the zeta and omega n is decreasing, so यहाँ पे zeta बढ़ रहा है and omega n is decreasing, so overall omega d in this case it will decrease. Okay, and next parameter let us discuss location of poles. Okay, so location of poles is given by, so we have seen that the poles location it is given by minus of zeta into omega n plus minus j omega d. Okay, so this zeta into omega n is called
damping factor, that is minus of alpha प्लस माइनस जे ओमेगा डी. ओके, सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में अगर हम जीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ द पोल इज minus zeta into omega n. So if we are increasing the value of zeta by keeping omega n constant, it means our pole, it will shift to the left side. Okay, so poles will shift to left side. So अगर poles left side में shift हो रहे हैं, it means stability will increase. Okay, so stability is increasing, but in this case where zeta into omega n product is constant, तो अगर हम zeta को increase कर रहे हैं, so omega n will decrease, so zeta into omega n product, it will be constant. It means poles will remain at the same location. Okay, so we have one more parameter left, which is settling time. Okay, so fifth parameter is settling time, which is T of S. Okay, so 2% of the tolerance band के लिए जो settling time है, that is 4 into T, that is 4 by zeta into omega n. So if we are increasing the zeta and omega n is constant, and here zeta into omega n product is constant. Okay, so if we are increasing the zeta, so zeta अगर हम increase कर रहे हैं and omega n is constant, then this settling time it will decrease. Okay, and in this case जहाँ पे zeta and omega n का product constant है, so this denominator it will be constant, so it means settling time is constant in this case. Okay, so now we have seen time domain parameter. Now let us start with the P controller, that is proportional controller. So what is proportional controller? So proportional controller is a gain or amplifier in the forward path of the transfer function. Okay, so जो proportional controller है वो simply एक gain है that is represented by kp and it is present in the forward path. So now let us draw the block diagram of the proportional controller. Okay, so first of all we have the error detector. Okay, and we apply the input, that is R of S. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो controller है उसका जो gain है that is kp. Okay, so this is kp, then this is kp, then we have plant. Okay, so this is plant, and then we have output, that is C of S, and we take the feedback. So यहाँ पे क्या है, हम unity feedback consider कर रहे हैं. So and this is by default we consider negative feedback. Input is R of S, this is error, that is E of S, output is C of S. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो plant है we are considering second order system. Okay, so जो plant का जो transfer function है that is G of S, it will be given by omega n square by S into S plus 2 zeta into omega n. Okay, so we are considering the second order system. So plant का जो transfer function है that is G of S, it is equal to this. Now if we talk about before controller, okay, so suppose अगर controller हम introduce नहीं करते system में, then what will be the plant transfer function? So अगर हम इस kp को remove करते हैं, then जो overall plant transfer function है it will be given by T of S. So standard second order transfer function हो जाएगा, that is omega n square by S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square. Okay, so now this is the transfer function when controller is not present. So this transfer function, it is stable. Okay, so stable because all the coefficients of the characteristic equation are positive, so this is stable system. Okay, लेकिन अगर हम controller introduce कर देते हैं system में, then जो forward path gain है that is overall G of S, it will change. So with controller, what is forward path transfer function? So now this kp and this plant, they are connected in series or cascade, so this forward path transfer function, it will be forward path transfer function, which is represented by
जी ऑफ एस, सो ऑलरेडी जो प्लांट है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस इंटू एस प्लस टू जीटा इंटू ओमेगा एन. सो this is plant transfer function, and this kp and plant, they are connected in series, and in series we multiply the gain. So g of s, it will be equal to kp omega n square by s into s plus 2 zeta into omega n. Okay, now what is overall transfer function? So overall transfer function, it will be t of s, this will be equal to kp by omega n square by s square plus 2 zeta omega n s plus kp omega n square. Okay, so this is overall transfer function with controller. Okay, so from here we can observe that with controller and without controller, this zeta into omega n product is constant. Okay, so this is the transfer function with controller, and also we have obtained the transfer function without controller. So यहाँ पे भी क्या है, दोनों में क्या है, zeta into omega n का जो product है वो exactly same है. It means we can say that zeta into omega n product is constant, but this term is changing with the introduction of the proportional controller. Okay, so after the controller, this zeta into omega n product is constant. So if zeta into omega n product is constant, so it is called alpha, that is damping factor. It is constant, so this alpha, it is representing the real part of the pole we have seen. Okay, so it means रियल पार्ट ऑफ द पोल इज कांस्टेंट. इट मीन्स कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी जो पोल का जो रियल पार्ट है इट विल रिमेन सेम. सो रियल पार्ट ऑफ पोल इज कांस्टेंट. ओके, नाउ if suppose that we are keeping the gain of the controller greater than 1. Okay, so if kp is greater than 1, then from here we can find the value of, so this is representing the natural frequency of oscillation which is omega n dash. So omega n dash because यहाँ पे हमने controller introduce किया है. Okay, so from here we are getting omega n dash, it will be, so this is omega n dash square. Okay, so from here we are getting omega n dash which is root kp into omega n. Okay, so this is then omega n dash, it will be equal to root kp into omega n. So kp की वैल्यू अगर greater than 1 है, this implies that this omega n dash, it is greater than omega n. Okay, and so omega n dash की वैल्यू omega n से ज़्यादा है, and we have seen that zeta into omega n product is constant. So if omega n dash is increasing, then zeta dash, it will decrease. Okay, because we have to maintain the product constant. So now if we draw the root locus, then so suppose let us first consider a S plane. Okay, so this is sigma, this y axis is representing j omega. Okay, so we have already obtained the root locus for the second order system. So we have obtained a circle. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है विच इज़ ओमेगा एन एंड सेकेंड वन इज़ ओमेगा एन डैश. तो जो ओमेगा एन डैश है वो ओमेगा एन से ज़्यादा है. सो इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ टू सर्कल्स. ओके, सो दिस इज़ द रूट लोकस वी हैव ऑब्टेन. सो अगर हम उसको पूरा वेरी करेंगे तो हमें क्या है, एक सर्कल मिलेगा. ओके, एंड लेट अस ड्रॉ वन मोर सर्कल because omega n dash, which omega n is representing the radius, okay, of this circle. So omega n dash is greater than omega n, so we have to draw two circle. Okay, so this blue circle is having a radius of omega n, and this red circle is having radius which is omega n dash, and we have drawn
दिस इज कॉल्ड एस प्लेन. ओके, सो यहाँ पे क्या है, वी हैव सीन दैट जीटा इंटू ओमेगा एन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. सो इफ जीटा इंटू ओमेगा एन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, इट मीन्स जो पोल का जो रियल पार्ट है दैट विल बी कांस्टेंट. सो इट मीन्स अल्फा इज कांस्टेंट. सो वी हैव ड्रॉन a root locus where alpha is constant. So this is representing alpha. Okay, so यहाँ this is the location of the pole and this is also location of the pole. Okay, so this is for omega n, this is for omega n dash. Okay, so this is j into omega d and this will be j omega d dash. Okay, this is alpha. So this pole which is underdamped pole, so with this is making angle theta. Okay, and this pole whose radius is omega n dash, this is making another angle, suppose it is theta dash. So from here we can see that this theta dash is greater than, so this theta dash it is greater than theta. Okay, and as we know that zeta which is equal to cos theta, so अगर theta dash की value theta से ज़्यादा है, it means this zeta dash it will be less than zeta. Okay, so we have seen यहाँ पे जो zeta dash है उसकी value decrease होगी, it means it will be less than zeta. and यहाँ से भी हमने root locus से भी उसको verify कर लिया. Okay, so this green line it is representing that zeta into omega n product is constant. Okay, that is called alpha, that is damping factor is constant. So we have seen that with the introduction of the P controller, zeta value will decrease and zeta and omega n का product constant है, so omega n will increase. Okay, so because of this omega d, that is damped frequency of oscillation, which is omega n into square root of 1 minus zeta square. So omega n increase हो रहा है and zeta की value decrease हो रही है. This implies that omega d will increase. Okay, so omega d is increasing. Then what is the effect on the time period of oscillation? Okay, so time period of oscillation is given by, so time period of oscillation it is given by, that is 2 pi by omega d. Okay, so omega d जो है वो क्या है, increase हो रहा है. It means टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस विल डिक्रीज. सो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, इंक्रीज होगी. और वी कैन से दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट. देन what is the effect on the settling time? So we know that settling time it is given by 4 into t for the 2% of the tolerance band, which is 4 by zeta into omega n. So zeta into omega n का जो product है वो constant है, it means denominator is constant, so settling time it will remain constant. Okay, and then what is the effect on the MP, that is peak overshoot. So MP is inversely proportional to the zeta, so zeta value is decreasing because of the proportional controller, so peak overshoot will increase. Okay, so MP will increase. Okay, then what is the effect on the stability? Okay, stability पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? So we have seen that zeta into omega n product is constant. So जो पोल का जो रियल पार्ट है that is so पोल रियल पार्ट is s is equal to minus zeta into omega n plus minus j omega d, which is j omega n square root of 1 minus zeta square. Okay, so जो पोल का जो रियल पार्ट है that is zeta into omega n is constant. It means ना तो पोल लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना तो वो राइट शिफ्ट हो रहा है. So it means real part of the pole is constant, so it means stability is constant. So in this case stability is constant because alpha is constant. Now let us see the effect on rise time because of the proportional controller. So rise time is given by pi minus cos inverse of zeta divided by omega d. Okay, so because of the proportional controller zeta value is decreasing and zeta decrease हो रहा है, omega n increase हो रहा है, तो जिसकी वजह से omega d जो है वो क्या है, increase होगा. So omega d is increasing, it means rise time will decrease.
Okay, so it means rise time is decreasing, it means speed of the response is more. Okay, because system को 100% of the final value तक reach करने में कम time लगेगा, so it means obviously जो response की जो speed होगी it will be more. So in the proportional controller, so proportional controller has good speed of the response. So proportional controller has good speed of the response because rise time is less. So good speed of the response, due to which control system become faster. So due to which control system become faster. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा ज़ीटा डिक्रीज़ हो रहा है, ज़ीटा जो है वो क्या है, एक तरीके की फ्रिक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है. तो अगर सिस्टम में फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स अपोजिशन कम है, सो इट मीन्स rise time will decrease, so system will take less time to rise, or it will take less time to get to the 100% of the final value. It means definitely speed is more. Okay, so you can understand like this. Now let us see what is the effect of the proportional controller on the steady state error. So उसके लिए सबसे पहले we have to consider the characteristic equation. So characteristic equation with the controller, it is given by s square. Okay, so the denominator of the transfer function we have already obtained, it is called the characteristic equation, that is s square plus 2 zeta omega n s plus, it can be written as root kp omega n whole square, this is equal to 0. Okay, so from here we have obtained omega n dash, which is root kp into omega n, and from here suppose this is x, so from here we are getting the zeta value as x by 2 root kp into omega n. Okay, so यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, सो वहाँ से जो जीटा है वो हमें इतना मिलेगा. सो नाउ इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के पी, okay, so if kp is increasing then this zeta it will decrease. Okay, so type of the system is 1 because proportional controller is constant whose gain is kp, and जो plant है उसमें क्या है, एक पोल origin पर lie कर रहा है, that is s power is 1, so that is why the type of the system is 1. Okay, so type of the system is 1, and suppose if we apply the ramp input, so r of s it will be equal to 1 by s square. Okay, because we are applying the ramp input, so steady state error in case of टाइप 1 एंड रैम्प इनपुट इट इज़ गिवन बाय 1 बाई के वी, एंड अगर हम के वी की वैल्यू ऑब्टेन करें देन इट विल बी इक्वल टू स्टडी स्टेट एरर वी आर गेटिंग 2 इंटू जीटा बाई kp into omega n. So if kp value is increasing then this steady state error it will decrease. Okay, so it means if we are increasing the value of kp then zeta value is decreasing, so zeta is decreasing, it means steady state error is decreasing. So अगर error कम हो रहा है it means accuracy is increasing. Okay, and also stability will decrease. Okay, so because यहाँ पे क्या है कि हम kp की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं, it is not constant, so zeta will decrease, steady state error is decrease, and if kp is increasing, okay, so if this kp is increasing then this omega n it will also increase, so zeta decrease हो रहा है, omega n increase हो रहा है, so stability it will decrease. So it means in the P controller, if steady state error is decreasing then stability is also decreasing. So अगर stability increase होगी so it means error will also increase. So that means if we are using the P controller, so using the P controller, if suppose we are increasing the stability by varying the Kp value, so if stability of a system is increased,
if the stability of a system is increased, then सो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है देन डेफिनेटली एरर विल इंक्रीज. सो अगर एरर इंक्रीज हो रहा है देन इट मीन्स एक्यूरेसी विल डिक्रीज. ओके, so accuracy will decrease and vice versa. So vice versa means if we are decreasing the stability, so अगर stability decrease होगी तो error भी decrease हो जाएगा, but दोनों एक साथ नहीं होंगे. ठीक है, vice versa. So that is why the P controllers, they are not used alone. Hence P controller, that is proportional controllers, alone they are not used. Okay. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंटीग्रल कंट्रोलर एंड वी विल सी पीआई कंट्रोलर ऑल्सो. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.